225 members rose in favor of clause 24 and no member rose against it. Consequently, clause 24 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. Question is that clause 25 do stand part of the bill. All those in favor of it may rise and count be made. आलिया साहबा, आप तो ठीक हो गई जी। मुसरत साहबा, तमीना साहबा, फारूक साहबा, नवाब साहब जी तशरीफ रखें। All those members against it may now rise and count be made. (225) members rose in favor of clause 25. No member rose against it. Consequently, clause 25 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. The question is that clause 26 do stand part of the bill. All those in favor of it may rise and count be made. आलिया साहबा ठीक हो गया, मुसरत साहबा, तमीना साहबा, फारूक साहबा, नवाब साहब जी तशरीफ रखिए जी। All those members against it may now rise and count be made. 225 members rose in favor of clause 26. No member rose against it. Consequently, clause 26 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. The question is that clause 27 do stand part of the bill. All those members in favor of it may rise and count be made. आलिया साहबा ठीक है, हो गया। मुसरत साहबा, तमीना साहबा, फारूक साहबा, नवाब साहब जी जी तशरीफ रखिए प्लीज। All those members against it may now rise and count be made. (225) members rose in favor of clause 27. 0 member rose against it. Consequently, clause 27 stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. Clause 1 preamble and title. The question is that clause 1 preamble and title do stand part of the bill. All those members in favor of it may rise and count be made. जी मुसरत साहबा, तमीना साहबा, फारूक साहबा तक पहुंचाएंगे। आपको बताएंगे कौमी असेंबली में 26वीं आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर कर ली गई है, जबकि आपको बताएं तहरीक इंसाफ ने पहले ही वॉकआउट कर दिया था। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को बताएं। तमाम तर आपको बताएं कि शिकें मंजूर कर ली गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम कौमी असेंबली से मंजूर कर ली गई है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली का अहम तरीन इजलास जारी था, जहाँ पर आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का सिलसिला जारी रहा और आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर कर ली गई है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले ही वॉकआउट कर दिया गया था। इस तमाम तर प्रोसेस का अपने नाज़रीन को ये बताते चले कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुबह सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत करेंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत करने के बाद ये आईनी तरमीम नाफिजुल अमल होगी और इसी हवाले से तमाम तर अराकीन के लिए ऐवान सदर में नाश्ते का भी एहतमाम किया गया है। Clause 1 preamble and title do stand part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. Law Minister Saab to move item number 3. Mr. Speaker, I, Senator Azam Nazir Tarid, Minister for Law and Justice and Parliamentary Affairs, wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed.